So today what we'll do is we'll try to fetch all the employees. So I will try to add an endpoint when I want to get all the employee information. So let me create another endpoint and name it as get all students. Okay, get all students. So no need to give capital in the endpoint URL because this will be a URL, right? And we don't see capital in the URL. So this would be what get. Okay, then you can give the same name to the function if you want. So what function do we get? Get all. So let's make A capital and studs capital. So this will not accept any argument, right? Because we are going to get the record of students. So we will not pass anything. So whenever I call this endpoint will return me details of all students. So what should be the return type of this? Any guesses? What should be the return type of this method? Hmm? So this will return me a this will return me a list of students. Will return me a okay. So will not return me a student. Will return me a list of students. Okay. So I call the stud service method and let's have the same name the stud service also. And whatever this will return, this will return me a list of students. So I will just return back. सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. I'm sorry. Now Yes sir. so now I have added this endpoint which is mapped to this method which will return me all the students. So it will be a list of students. So controller interacts with the service. So the service I am calling a get all students. So let's create this function. Okay, and the service interacts with the repository. So let's say we have the repository on top, right? Stud repo. So we have stud repo dot and we have the function called as find all. See, so find all will give you all for the student entity. Import the list. Why would you want to create a list? Why can't we just import it? भाई create क्यों बोल रहा है ये? सीधा import क्यों नहीं कर सकते? इतना फुर्सत इसके पास है कि वो create करते हो. ओके वो यहाँ से मार रहा देखो. कंट्रोलर और लिस्ट कोई है कि अपने पास कुछ भी नहीं. तो ये ऑलरेडी कोई भलता इंपोर्ट हो चुका था इसके लिए वो जो है यूटिल वाला इंपोर्ट नहीं दिखा रहा था. ठीक है ये हो गया. और तो करना है रिटर्न. क्या करना है इसको अपन को रिटर्न करना है. तो या the repo will return all the students to the service will return all the students to the controller and controller will return all the students to the front end. Make sense? All we have to do is just hit this endpoint. So I copy this endpoint and let's do a rerun of the application. Meanwhile it is running, let me prepare the API dog and add this API also over there.
So how do we add a new API? We click on this plus. Okay. तो प्लस पे क्लिक करने का कितना टाइम लगा? आ गया। तो एंड पॉइंट कहाँ से करेंगे? तो पिछला कोई एंड पॉइंट है, let's create a new endpoint. So what was the endpoint? Any guesses? This endpoint is what? Get all students, and get is a, so this is a get API. Okay, so this is fetch all students. ठीक है, सेव कर दो इसको। कोई इनपुट पास करने की जरूरत नहीं है, just do a run and let's do a, did we write over there get mapping? See, we are using a post mapping, दिख रहा है इधर? हेलो, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? Yes. गेट मैपिंग। अब यहाँ चेंज हो गया, तो यहाँ सेव करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, वापस रन करना पड़ेगा। तो यहाँ चेंज हो गया, ये गेट मैपिंग हो गया। अब हम ये API को हिट करके देख सकते हैं कि हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब आ रहे हैं क्या इसके अंदर। ओके, सो इफ इट विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन JSON format. So let's try to hit, it has started, let's try to hit the API and see what it response we get. So in a JSON format array of students should come. तो array में सबसे पहले आता है स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट में जो सबसे पहले क्या आता है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा पहला कर्ली ब्रैकेट कॉमा, दूसरा कर्ली ब्रैकेट कॉमा, तीसरा कर्ली ब्रैकेट। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सब इस फॉर्मेट में आएंगे। आ गए? दिख रहा है? हेलो? Yes, sir. तो आपका काम एज अ डेवलपर ये लाके दे देना है बस, और फ्रंट एंड वाले को बोलना है कि ये एंड पॉइंट है, आपको स्टूडेंट सारे चाहिए, ये एंड पॉइंट हिट करो। उसको बोलना कि ये बेस URL है और ये मैंने स्टूडेंट्स को फेच करने के लिए गेट मैपिंग वाला यूज़ किया है। तो इतना दे के आपका काम ख़त्म हो जाता है। फिर टेस्टिंग टीम टेक ओवर करती है, मैन्युअल टेस्टर्स फिर देखते हैं कि भाई सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा है क्या। और फिर अगर आपको ये फ्रंट एंड पे दिखाना है तो फिर आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं, फिर यही डेटा आपको फ्रंट एंड पे भी दिखाने आना चाहिए। एज ऑफ नाउ यहाँ तक भी आ गया तो योर वर्क इज डन। इफ यू कैन रिटर्न द डेटा इन द JSON फॉर्मेट you can log out and tell sir my work is done, now it's the front end team's headache how they want to display it। हाँ, API में डेटा अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बोलो आप कि सर सबके डिटेल्स नहीं आ रहे, ठीक है? ओके, अभी अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है कि भाई मुझे 1 का रिकॉर्ड देखना है, रोल नंबर 1 का, तो अभी तो एक और एंड पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, 1 जो है वो गेट ऑल स्टूडेंट्स में नहीं है, तो क्या करते हैं हम बनाएंगे गेट सिंगल स्टूडेंट, जो भी ये मैंने अलग से एक एंड पॉइंट बना दिया। तो क्या कर दिया गेट, अब ये गेट सिंगल स्टूडेंट मतलब हमको उसका क्या पास करना पड़ेगा? क्या पास करना पड़ेगा उसका? Roll number. रोल नंबर ना, क्योंकि प्राइमरी की से ही हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। तो किसमें लेंगे अब इसको? किसमें लेंगे? बोलो भाई। Request parent. रिक्वेस्ट पैरम। तो मैपिंग कौन सा होगा? ये गेट ही होगा सर। गेट ही होगा ना, Fetch ही कर देंगे। ठीक है। तो रिक्वेस्ट पैरम तो मैं क्या करूंगा, वहां से जब जो पास करूंगा वेरिएबल तो उसको रोल नंबर दूंगा, ठीक है। अब तुमने मुझे बताना कि डिफरेंस क्या है, ठीक है।
अब कौन सी चीज मुझे कहाँ लेनी है तुम लोग मुझे बताना। ओके, आगे जब मैं सर्विस को फंक्शन कॉल करूंगा गेट सिंगल स्टूडेंट, तो उसको क्या पास करूं? आर नंबर सर। यस, उसको आर नंबर पास करेंगे, क्योंकि ये जावा के लिए वो आर नंबर है, फ्रंट एंड वालों के लिए वो रोल नंबर है। तो क्या पास कर देंगे उसको, और वो मुझे क्या देगा, स्टूडेंट का लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट तो इसके लिए चेंजेस आपने करना, कस्टमाइज करना अपने अपने एप्लीकेशन को। अब ये फंक्शन है कि आपने सर्विस में नहीं है तो क्रिएट कर दो। ठीक है, अब रिपो के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, फाइंड बाय। क्या फंक्शन है? फाइंड। तो अगर आपने जिसको आईडी अलॉट किया, आप उससे सर्च कर रहे हैं ना अभी, है क्या नहीं? यस। तो फाइंड बाय आईडी दिख रहा है। तो रिपोजिटरी बहुत ही काम की चीज बना के दिया है स्प्रिंग बूट वाले ने, तो हर काम आप इसमें यहाँ कर सकते हैं। तो किससे कर रहे हैं? ठीक है, तो इसमें देखो डेटा आ भी सकता है और वो रोल नंबर नहीं भी हो सकता है, राइट? तो इसके लिए फिर क्या करने का, उसके अंदर डॉट गेट, क्योंकि ये दिस विल रिटर्न ऑप्शनल, दिस विल रिटर्न अ ऑप्शनल। सो व्हाट हैपेंड, स्ट्रिंग टाइप कहाँ से आ गया रोल नंबर भाई? स्ट्रिंग टाइप कहाँ से आ गया रोल नंबर? रोल नंबर किस टाइप का होगा? इन टाइप का होगा ना। तो अभी इसको भी चेंज करना पड़ेगा अपने को, इधर सर्विस में जाके, कि किस टाइप का होगा ये, इन टाइप का। ठीक है, तो दिस विल रिटर्न, दिस नंबर कैन बी देयर, कैन नॉट बी देयर, करेक्ट? यस। So it returns a type of optional. So to convert that, you can just say dot get, dot get। तो अभी हमको ये एक स्टूडेंट रिटर्न कर देगा। चेंजेस अपना हुआ है, तो रिफ्रेश करना पड़ेगा एप्लीकेशन। एंड पॉइंट क्या है याद रखो सिर्फ, कि क्या एंड पॉइंट है, गेट सिंगल स्टूडेंट, है ना? तो यहाँ पर जाओ और ये कॉपी कर लो, इस पर कॉपी कॉपी राइट वाला क्लिक काम नहीं कर, नया एपीआई बनाओ। ओके, पाथ तो यही दे दो, सिर्फ क्या कर दो, गेट सिंगल स्टूड, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो लिखना है, जो भी इसका नोट लिखना है, डॉक्यूमेंट लिखना है उसका, फैच रिकॉर्ड ऑफ सिंगल स्टूडेंट बाय आईडी, बाय क्या, बाय आईडी। ठीक है, और फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, पैरामीटर पास करने पड़ेंगे ना। तो पैराम्स में चले जाओ, अब बोलो यहाँ पर क्या पास करना है। आईडी है सर। तो क्या पास करेंगे इधर, जब ये अपने कोड में यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, ROLLNO क्या RNO? रोल नंबर सर। रोल नंबर, करेक्ट। सो यस सर। तो यहाँ पर इसको सेव कर दो, जब रन करेंगे तब पास करेंगे आप। ओके, जब इसको रन करेंगे, अब यहाँ पर पास करने का, ठीक है, ROLLNO। तो पहला रोल नंबर कौन सा है अपने डेटाबेस में, 1 है ना? यस सर। तो मैंने 1 पास कर दिया और सेंड कर दिया, तो देखते हैं 1 का रिकॉर्ड आता है क्या, आया? ओके, आया आउटपुट, यस नो मे बी। यस। तो फ्रंट एंड वाले एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो 1 पास करेंगे और अपना एंड पॉइंट हिट करेंगे। ठीक है, वो फ्रंट एंड वाले करेंगे, अपना काम सिर्फ देखना है कि ये एंड पॉइंट काम कर रहा है क्या। इफ आई चेंज द आर्ग्यूमेंट टू एंड डू अ सेंड, आया? यस सर।
ओके, तो अभी ये जो रिपोजिटरी है ये इतना वर्सेटाइल है, इतना डायनामिक है। अब अगर मुझे नाम से सर्च करना है, किसे सर्च करना है, तो मेरे पास जितने प्रॉपर्टीज है ना क्लास में, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी क्या नाम है, क्या है, एस नेम। अब ये इतना डायनामिक है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं स्प्रिंग बूट, कि उसके अंदर रिपोजिटरी के अंदर एक मेथड है, एक क्या ऐसे हजारों मेथड्स है। तो उस मेथड का फंक्शनैलिटी कैसा है मालूम है क्या, कि उन्होंने फाइंड बाय फंक्शन बनाए हैं। क्या बनाए हैं, ठीक है। तो समझो अगर मैंने ये इंटीजर रोल नंबर है और मेरा एक है स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा हुआ है, फाइंड बाय छोटा एफ बड़ा बी, है ना, और फिर आपका ये जो प्रॉपर्टी है ना वो लिख देना। तो एस छोटा क्या बड़ा, जब फंक्शन लिखेंगे इधर तब बाबा, फाइंड बाय एस नेम, हाँ तो एस छोटा क्या बड़ा, एस बड़ा। ओके। अगर आपके पास एक और है स्ट्रिंग ईमेल और आपको ईमेल से सर्च करना है, तो जितने आपके पास प्रॉपर्टीज है क्लास में, फाइंड बाय से आप सिर्फ फाइंड बाय प्रीफिक्स करो। क्या प्रीफिक्स करो, क्या प्रीफिक्स करना है, और फिर कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं रिपोजिटरी का, तो ईमेल छोटा क्या बड़ा, बड़ा बड़ा ई। समझ में आया तुम लोगों ने, समझ में आ रहा, तो ये सब अपने आप बना देता है, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको किसी नाम से सर्च करना है तो आपका काम क्या रहेगा सिर्फ, तो आपका काम फ्रंट एंड टीम को सिर्फ एंड पॉइंट देना है। तो फ्रंट एंड टीम का रिक्वायरमेंट आता है कि आई वांट टू सर्च अ एम्प्लॉय बाय हिज नेम, व्हाट एंड पॉइंट हैव यू क्रिएटेड, बोला गिव मी 5 मिनट्स आई विल क्रिएट इट। तो just copy this existing endpoint and paste it and get a student by name. Okay, so I am writing this over here in capital, but it is not recommended that you have an endpoint in capital. Okay, so you all can, but the function we have, we know. So what function we know, we have to write, and what will be passed to it now. So if I say stud name over here, what will I take over here, स्प्रिंग एस नेम। okay, I can take anything now, I can keep it same also. And now what will I say, which function do I want to create in the service now, is this stud name there, is this function there now, it's not there, right? So I'll create one. And what will I, which function will I use of the repo now, which function will I use of the repo, फाइंड hmm? बाय स्टूडेंट नेम। Find by what, okay, yeah, what we have to do is, sorry, such methods though we have to add to the repository. Where's the repository, yeah, just add that to the repository, such functions. So what are we expecting in return, what are we expecting in return, hello, right? So we have this function, right, find by and the property name with a capital S, right? So automatically it will give you that function. This is the interface, right? You don't write the implementation. It will automatically implement it for you. So your job will be just go to the service and invoke this method and pass the stud name which you have got.
Am I understood? Yes, no, maybe. Yes, sir. I stop this and do a rerun. It's I've used get mapping, right, for that, because we are fetching. For fetching we do the get mapping. Where is it? We are in the controller. So yes, we have used get map. What is the endpoint we have? Get student by name. Okay. So let me replicate this endpoint. So let me copy this. Okay. So when you join a company, ask them for the API endpoints we have. So if you are working on a project, tell them, sir, can I have the existing endpoints? So they will give you a list of all the endpoints which we have. So what would we have? Get student by name, right? So don't need to give capitals over here. Give student by name. Yeah, get student by name. Let me save it. And what will we say over here? Fetch student by name. Save it. Okay, run it. And when we send, that time we can give what? So what did we give as a request query params? And now let's give us over here Ben, and let's do a send. Not found. There we did not get any student by the name Ben. It is saying. Why? Let's say if we have by the name Elsid. We didn't delete any student as of now, right? Elsid also not found. Why is it saying so? Let's check. Recommend that we change the name of the column name. So this column name, what is this over here? Student name, right? Maybe it is conflicting over here. Maybe it is conflicting over here. So because repository interacts with the database, right? So where is the repository? Find by, if we have to give this student name, then and then we'll also have to change that, no, then initially. Hello. Just by changing over here will not help, right? Because we have to invoke it from the service, correct? अरे हाँ क्या ना, लोग है क्या जगह पे है? So now let me invoke it and check. So don't try to fidget around with the college column names and have different column names in the database. Keep it same as the properties only. It becomes easier for this find by functions. Now what happened over here? Now it is telling that your annotation is not working. SBI controller field student service depend creating student service to field student repo. स्टूडेंट repo नहीं बना पा रहा है वो, क्योंकि वो उसी की वजह से, क्योंकि उसने टाइप स्टूडेंट। ओके, तो ये हमको वही रखना पड़ेगा जो क्लास के अंदर होता है, टेबल वाले को यूज नहीं कर सकते। we'll have to use the same which is there in the class. We cannot use the one in the database. So this should return the public student. Yeah. Okay, now again you have to change it, no, in the service also. रिपोजिटरी का फंक्शन चेंज हुआ तो सर्विस में चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो फंक्शन रिपोजिटरी सर्विस को कॉल, सर्विस रिपोजिटरी को कॉल करती है। जब वहाँ फंक्शन का नाम चेंज हुआ तो यहाँ भी चेंज करना ही पड़ेगा।
ओके, तो ये रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट। और फिर ये सर्विस में कंट्रोलर में गए तो ये भी स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है। हाँ सही है। तो फिर स्टूडेंट का नाम जब मैं दे रहा हूँ इधर, और स्टूडेंट नेम, राइट, वही नाम है ना, स्टूडेंट नेम, हाँ वही है। और जब मैं एलसीड दे के सेंड कर रहा हूँ तो इसको क्यों नहीं मिल रहा? नॉट फाउंड बता रहा है ये। स्टूडेंट नेम एलसीड इज नॉट फाउंड। व्हाई इज इट नॉट फाउंड? इज देयर, राइट? It is there. It should get it. It should get. SBI V1 get student by name. एंड पॉइंट सही है क्या? कैपिटल्स में तो कोई इशू नहीं है करने का, एंड पॉइंट का तो इशू नहीं है कैपिटल वर्क का। चलो अभी तसल्ली के लिए अगर तसल्ली करना है तो, वरना एरर मैसेज अलग आता था। द एरर मैसेज वुड हैव चेंज्ड। तो कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है। गेट स्टूडेंट बाय नेम, या student name equals to question mark. Yeah, this is the query which we are running. Select student here. Then why is it not showing me? Get student by name, and we are passing the parameters over here and doing a get. Yeah, all looks good to me. Student name, string student name, ये सब जो है ना इसके वजह से भी हो सकता है कि कॉलम का नाम गलत दिया हो। स्टूडेंट बाय नेम, स्टूडेंट नेम, गेट स्टूडेंट बाय नेम, स्टूडेंट नेम, एंड देन रिको का फाइंड बाय एस नेम कॉल किया, स्टूडेंट नेम पास किया। यस, और रिको में जाके हम लोगों ने एक बनाया है मेथड जो कि फाइंड बाय एस नेम है, उसको स्ट्रिंग एस नेम ले रहे हैं। यस, वो रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट का क्लास का ऑब्जेक्ट। परफेक्ट। लेट मी रिसर्च ऑन दिस गाइस मीनवाइल, why is it throwing this error? You all can practice this what we have done today. Okay.